Next, let us move to SKCET Coimbatore Center for interaction with Atik Mohammed from Tyagarajar Polytechnic और इन्होंने हेरिटेज रेस नाम का गेम क्रिएट किया है. The most respected, honorable, beloved PM sir, namaskar. I am Atik Mohammed. Atik ji, आपके साथ कौन है? Who is with you? Who are with you? I'm solo, sir. Since due to COVID crisis, I'm alone here. I'm Atik Mohammed, the team leader of Heritage Race, currently pursuing my final year of Diploma Civil Engineering at Tyagarajar Polytechnic College, Tamil Nadu. I would like to demonstrate my innovative model of digital toy, Heritage Race, and virtual reality cycling experience. My game concept is all about creating an indoor virtual reality cycling experience for both normal peoples as well as the Divyang users, that's especially able persons, for boosting their physical and mental fitness, as well as to have virtual rides among the great monuments and the ancient cities of the Indian nation. This is the main motive of our ride. This is all done due to the reasons, the change in global trends, sir. Due to the COVID crisis, many of the monuments are now being shuttered down, which leads to the less in tourism activities. To overcome this issue, we are creating a virtual environment in which the user can have the cycling experience. The game is framed in a way that it can be accessed easily and more feasible to increase the affordability of the game. By sitting onto a cycle in indoor and wearing the virtual reality headset onto their eye point, the user can easily access the game and get into the environments like Taj Mahal, which are developed graphically. Once after they started to pedal in the real environment, in the real world, it will be personified that they are actually moving in the virtual world. By wearing this virtual reality headset, and this is applicable with the beautiful illusion setups and corresponding Vedic background music, which will also be provided to gain the mental fitness of the users. This is how we have entirely framed the toy games. Yes, sir. अतिक जी, yes, sir. सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देता हूं. आपने साइकिलिंग और वर्चुअल हेरिटेज साइट सीइंग एक साथ लाकर ये गेम बनाया है. बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं देख रहा हूं कि ये फिटनेस, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट एक प्रकार से ये तीनों का संगम है. ये कैसे काम करेगा और ये आइडिया आपको कब और कैसे आया? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बनाया है और आजकल दुनिया में टूरिज्म एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है. It's all due to the problem statements which is being provided by the Toykathon team, sir. They gave us the problem statement about to increase the culture of the toy should be in increased culture way. It also promote the physical and mental fitness of the user, and it should also be an entertaining toy. This is the problem statement awarded to us by the Toykathon, and we innovated to as a finding solution for that toy for that question. We innovated this toy, sir. Hands off for Toykathon team. अतिक जी, ये आपने जो गेम बनाया है उसके विषय में जब मैं सुन रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि शायद इसके लिए काफी कुछ नए नए आपको प्रयोग करने पड़े होंगे, तब जाकर के यहां तक पहुंचे होंगे. आपके अपने खुद भी तो आयु भी बहुत छोटी है, खुद की पढ़ाई का टेंशन रहता होगा, कोरोना के भी टेंशन रहा होगा और रेगुलर पढ़ाई का भी एक जिम्मा, परिवार की भी बहुत अपेक्षाएं होगी. तो ये काम को कैसे किया आपने, कैसे मैनेज किया? How did you manage the idea? We worked as a team with our the college also supported us for developing this idea. Only the entire idea concept was ours, but this toy is involving with several departments like 3D modeling, importing to Unity 3D, etc. And sensor setup is also being provided. For that, we had taken several mentor supports from our college for developing this innovative model, sir.
अतीक मोहम्मद जी, मेरी तरफ से आपको अभिनंदन तो देता हूं। आपका ये इनोवेशन ऐसे समय में आया है जब काफी लोग कोविड की वजह वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्चुअल टूर से लोगों को काफी मदद मिलेगी। मेरा सुझाव है कि अगर संभव हो तो आप अपने इस गेम को ट्रेडमिल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, स्मार्ट वॉच के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, लोगों की स्पीड के हिसाब से वीआर एक्सपीरियंस बदल जाए तो उनकी घर बैठे एक्सरसाइज और साइट सीइंग दोनों ही हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आप इसमें बहुत नई नई चीजें जोड़ सकते हैं और मेरा आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई भी है और शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you very much, sir.